Good morning, students. Welcome to the online class. I hope you all are good and preparing for your exam. Students, you all are update your BBPS app version 1.1.7. I hope you all did, but those who have not yet updated it now. Okay? So students, your examination timing for periodic exam is 8 a.m. to 10 a.m. So best of luck for your exam. Let us start our today's work. Today I will take your revision test of chapter 13, Bhujangasana. Students, you all are well known that what is yoga. Yoga is a way of freedom. Okay, yoga is a way of freedom, and you may not be able to control the whole world. You may not be able to control the whole world, but you may learn to control your inner world through yoga. Okay, so let us start your revision test. Revision test 4. Okay, first is question number 1. Fill in the blanks. First, Bhujangasana helps in curing the dash system. Bhujangasana helps in curing the dash system. So इधर हम लोग क्या फिल करेंगे वो आपको लिखना है. Second point is Bhujangasana is made up of two dash what? Is made up of two dash word. किन दो शब्दों से मिलके भुजंगासना बना है, वर्ड बना है. सो आपको इधर जो भी इसकी फिलअप्स है वो आपको फिल करने हैं. थर्ड पॉइंट इज भुजंगासना इज अ बेसिक डैश पोज. ओके, भुजंगासना इज अ बेसिक डैश पोज. सो you have to 3 fill-ups. Okay, question number 2 is write true or false. 1. Bhujangasana strengthens the shoulder. This statement is true or false. Okay, second point is Bhujangasana relieves pain in the back. Bhujangasana relieves pain in the back. So this statement is true or false. If this statement is true, so write here true. Okay, if false, so write here false in black pen. Okay, third, the top of the feet should always touch the ground while performing Bhujangasana. Understood? The top of the feet should always touch the ground while performing Bhujangasana. This statement is if true, so write here true, and if false, so write here false. Okay, our last question is question number 3, question answer. Okay, your question 1 is what does Bhujangasana mean? What does Bhujangasana mean? Second question, in which two ways can Bhujangasana be practiced? Okay, in which two ways can Bhujangasana be practiced? Your question number 3 is which form of yoga does Bhujangasana belongs to? Which form of yoga does Bhujangasana belongs to? So आपको ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको लिखने हैं. ओके, राइट ओनली आंसर. ओके, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है. अगेन आई रिपीट योर रिवीजन टेस्ट पेपर. First, fill in the blanks. First, Bhujangasana help in curing the dash system.
Bhujangasana helps in curing the dash system. Second, Bhujangasana is made up of two dash word. Bhujangasana is made up of two dash word. Third, Bhujangasana is a basic dash pose. Bhujangasana is a basic dash pose. Question number second, write true or false. Bhujangasana strengthens the shoulder. If this statement is true, so write here true. Okay, if false, so write here false. Second, Bhujangasana relieves pain in the back. Bhujangasana से जब हम करते हैं तो इससे बैक जो है हमारी उसमें हमें रिलीफ मिलता है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो आपको इधर ट्रू लिखना है. ओके. थर्ड, द टॉप ऑफ द फीट शुड ऑलवेज टच द ग्राउंड while performing Bhujangasana. The top of the feet should always touch the ground while performing Bhujangasana. So this statement is if true, so write here true. If false, so write here false. Question number third, question answer. Question 1, what does Bhujangasana mean? Bhujangasana का मतलब क्या होता है? Okay. Second, in which two ways can Bhujangasana practiced? Okay. In which two ways can Bhujangasana be practiced? Third, which form of yoga does Bhujangasana belongs to? Which form of yoga does Bhujangasana belongs to? So students, give your answer. Okay. Write only answer. आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है. बार बार आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्वेश्चन लिखना है कि नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट ओनली आंसर. ओके. जिस तरह से मैंने ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करके इसको किया है, उसी तरह आप भी करिएगा. And student, today is your last day to submit your copies in school. So जिन बच्चों की कॉपीज़ अभी भी नहीं सबमिट हुई हैं, तो वो अपनी कॉपीज़ को पेरेंट्स के साथ जाके स्कूल में सबमिट कर दें. इफ़ देयर वर्क इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट, अगर उनका वर्क कंप्लीट है या नहीं है, वो तब भी अपनी कॉपी सबमिट स्कूल में कराएं, अपना चेक करवा लें. उसके बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स. ओके. सो अपने 20 मार्क्स को बिल्कुल मत जाने दीजिए. अपनी कॉपीज़ को ज़रूर जाके चेक करवाइए कल, टुमारो. ओके. सो गुड डे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स and best of luck for your exam. Hope you all are doing well.